of them are looking very, and some of them are looking quite nervous. What happened? Yes, so we'll shortly start with the audition process. And the audition will be having your brief introduction. You have to tell them about yourself. So there is nothing to be nervous about it, as this is a one-on-one communication. And there will be 2 rounds of ramp walk. Okay. And today we have a special mentor with us, जो आप ही की तरह audition से जाते हुए, training के process से आगे जाते हुए, who is here to mentor you today. So we have Dhwani Waghela, and also we have Harry Khosa, who will be, judging you throughout your audition round. So let's hear it first from Dhwani Waghela. Thank you. Hello, everyone. Thank you so much, Sarah. It is my great pleasure to be here. To be honest, my journey with FCR for the past 3 rounds has never been the one where I felt like I was competing with my fellow participants or my batchmates. It was more of like I was challenging and competing myself to be a better version of myself at the end of this. So all rounds that we have been through, like the talent round 1, 2, 3, it was like every step that we were taking towards becoming a better version. Like I still remember my first round and towards sitting here, it's a drastic difference. And what has led me here is the guidance of top-notch and experienced trainers that I was honored to have through all of my journey through this. So if I have any of the tips to give all of you beautiful people here is, first, enjoy the journey. Make friends, respect each other. This is more than just getting that crown. This is more than just a beauty pageant. This is a very big platform which teaches you so much more than what you're expecting. Second is, in every talent round, add something that sheds spotlight towards you. Don't be monotonous. Add something what explains yourself. Get the attraction of the judges towards, okay, this contestant did something and showed something why this platform matters to them, what is important, and we can see the importance and the dedication of them towards this pageant. Third is nothing else than understanding that this is more than just getting the crown, and being a part of Forever Star India is what explains it is a forever journey, and you're going to be a part of it even after this. So make sure of that. So this is not more than 2 to 3 months of a family. This is more than that. So all the best to everyone. I know that you're going to do great with that confidence of becoming better than what you are right now. So come with blank canvas, because you have trainers who are going to give you everything you want. They're going to train you every single thing. I came here sitting like a tomboy, wearing a t-shirt. I sat for my first training session, and right now here I am, what they made me. So you are already beautiful, but you're going to become better than what you are and what you expect yourself to be. And I have my word for that. Thank you so much for listening to me, and Thank all you, the best. Dhwani, for your kind words. Thank you so much. So, ladies, let's hear it from Harry Khosa, who is going to guide you throughout the process, and just a pinch of motivation from her. Harry, over to you. Thank you, Jaya. Thank you so much, Dhwani. It's, I take, and of course, the platform takes immense pride, for having you here today. I have seen you grow, and I've seen you become even more beautiful version of yourself. And kudos to you for, coming here today. I genuinely appreciate that a lot. Love your confidence, and thank you so much. So, all right, ladies, welcome to Forever Star India. I hope आप लोग ठीक हैं and you guys are all excited and happy for this one. So I know audition process usually associated to very nervous idea कि अरे क्या होगा, how will we figure it out? But trust me, it's going to be one idea of knowing you guys better, because आप लोग already unique, interesting individuals हैं. You just look at you, I can see some really beautiful women across the screen, and we are not here to judge you, but to give you an idea, to ensure that you put your talents into the right kind of opportunities. So let's get started. Like Jaya already mentioned, please keep your introduction very crisp. It should be about who you are. Secondly, your hobbies, and of course, the primary idea of why you are here.
आप वो क्राउन क्यों जीतना चाहते हैं, what is the basic incentive behind it. And I would just like to say all the best to everyone, and let's get to know you more, you guys. So yeah, let's get started. Let's hear it from Sashmita. I hope I pronounced your name right. Can I please have your audio? Up mute pe hain. Can you unmute yourself? Hello, Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you for asking. Can I please have your introduction? Yeah. Hi, I'm Sasmita Tripathi. I'm 36 years old from the city of Temples, Bhubaneswar, Orissa. I'm married from 11 years and I have 2 sons and they are really naughty. And the reason that I am here in this pageant competition is to build my self-confidence, which I think it's been suppressed from past few years because I was staying in Delhi from past 33 years. And then suddenly I have to move to Orissa. Just because of the changes that happened in my life, I think my self-confidence has little been suppressed. I just want to regain it, and I want to see the best of me by the good mentors like you and everybody who will be there. And that's it. I just want to be here to boost me, myself. Wonderful, Sashmita. And let me just tell you, first of all, you look lovely. Secondly, Thank you do not look underconfident at all. You are very transparent. And, I must mention it that it takes a lot of courage to put out your insecurities out publicly to an absolute stranger. You mentioned that you are not so confident and you want to work on it. So kudos to that. This is, I'm sure, the right kind of start to your journey, being very honest and transparent. So completely appreciating that. Thank you so much. And I would request you to start with your ramp walk. But before that, I would really like you to mention your hobbies first. Yeah, my hobbies are I love to listen music, I love to dance, I love to travel. I'm a foodie. Being living in Orissa, Bhubaneswar, and I love to eat sweets, every kind of mithai taste. And yes, I love to spend quality time with my family. Wonderful, wonderful. And now with that smile, go on, walk the ramp. Yeah, sure. Fine. Yeah, perfect. Thank you, Sashmita. Of course, you are a confident woman, but we need to polish the ramp walk a little. And of course, the trainers will be taking care of that. Thank you so much for talking to me. And I would, get back to you in a while. Okay. Yeah. So moving forward, let's hear it from Shilpa Patel. Hi, Shilpa. Hello. Hi, how are you? Fine, ma'am. Ji, go ahead. Apna introduction dijiye. Myself, Shilpa Patel, lived in Ahmedabad. मैम मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश में. अरे तो मुझे तो पंजाबी भी आती है, तो आप पंजाबी बोलो, कोई टेंशन नहीं. सी शिल्पा जी, क्या होता है, लैंग्वेज आपके सपनों के बीच नहीं आनी चाहिए, है ना. आपका सपना है, तो फिर वो इंग्लिश में हो या हिंदी में पूरा हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है. मुझे हिंदी भी आती है, पंजाबी भी समझ आ जाती है, सो आप हिंदी में बात कर सकते हैं. अच्छा, मेरा नाम शिल्पा पटेल है, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, 47 इयर्स ओल्ड हूँ, और एक चाइल्ड है मेरा जो बीएससी कर रहा है अभी, और मैं कभी ऐसी इवेंट में पार्ट नहीं लिया है मैंने, पहले कभी भी कोई भी इवेंट में नहीं लिया है, ओनली जॉब और घर. तो मैं और कुछ आगे नहीं बता पाऊंगी, और क्या बताऊं. ओके शिल्पा जी, ये आपका टाइम है, आपका वक्त है, आप यहाँ अपने लिए आई हैं, है ना. तो अपने बारे में बताइए, आपके बेटे के बारे में जानने के बहुत आएंगे, वो अपनी पहचान खुद बना लेगा. अब मुझे बताइए
बताइए आपको क्या आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना पसंद है? हाँ, मुझे गरबा, गुजराती गरबा बहुत पसंद है और वो करना भी मुझे बहुत पसंद है। म्यूजिक, रीडिंग और वो सब तो है ही पसंद। अच्छा, तो देखिए गरबा बोलती है आपके मुंह पे क्या रौनक आ गई है ना, आपको समझ आता है कि आपके कितने पैशनेट हैं। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों, आप गरबा में आपका शौक है, आपने कभी नहीं किया, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि शिल्पा जी ने सोचा कि अरे यार चलो ट्राई करते हैं? नहीं, मेरा बहुत टाइम से सपना था कि मुझे इस इवेंट में पार्ट लेना है, मगर मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे ले सकते हैं इसमें पार्ट, क्या कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन सर्च करने के बाद मुझे पता चला। फिर एक बार मैंने दिल्ली की कोई है, मीन्स ऐसी इवेंट करते हैं, इसमें पार्ट लेना सोचा, मगर उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया था, तो मुझे लगा कि अ, मैं जानती नहीं हूँ इसमें इतना, तो मैं कैसे वहां पर जाऊं। अगर वहां पर गए और कुछ हुआ तो फिर मैंने पार्ट नहीं लिया था। फ्रैंकली मैं बोलूंगी, जो भी हुआ है वो। फिर इसमें तो मेरी ऑलरेडी फ्रेंड है एक, उसने पार्ट लिया था। आई थिंक 2020 में वो थी। तो ओके, उसने बताया कि सेफली और अच्छा है ये, तो आप इसमें पार्ट ले सकते हो। तो फिर मैंने इसमें पार्ट लिया। ठीक है। तो शिल्पा जी, पहले तो आई अप्रिशिएट आपकी ऑनेस्टी। आपने बहुत ही खुल के बताया जो आपके दिल में था कि मुझे तो भरोसा नहीं था, लेकिन अभी मैं भरोसा कर पा रही हूँ। तो अभी भरोसा हो गया आपको मेरे से हाँ, बात? हाँ मैम। एक चीज तो, एक टेंशन तो खत्म हो गई है ना हमारी, चलो ये चीज तो हो गई। अब यस। शिल्पा जी, मैं बहुत ही आपकी इस चीज पे तारीफ करती हूँ कि आप एक प्रॉपर ड्रेस पहन के बैठी हैं, आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं, आपने लिपस्टिक भी बड़ी खूबसूरत लगाई हुई है। तो थैंक यू यू। आर ऑन सेट, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम वो लग रही हैं कि अनप्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही खूबसूरत है। अपने दिल की बात कहने के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है ना? तो वो तो आपने क्लियर कर दिया। अब आपकी रैम वॉक देखें। ओके मैम। ओके मैम। एक और राउंड शिल्पा जी। ओके। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। अब आप बैठ जाइए। थैंक यू शिल्पा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करती हैं कि हम मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे जल्दी मिलूं। थैंक यू। थैंक्स मैम। एंड आपसे बात कर भी, जी बोलिए। आपसे बात करके भी हमें अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स। चलो ठीक है। सो तो मैं थोड़ी देर से आपसे फिर से बात करती हूँ। आई जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड टॉक टू अदर्स। हाय ओके मैम। सिमरन। सिमरन आप म्यूट पे हैं। Yes, ma'am. हाउ आर यू? I'm good, ma'am. How are you? आई एम गुड। नाउ यू टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। Okay, I'm Simran Wadhwa. I'm from Mumbai, suburb of Ulasnagar. I'm 31 years old. I'm a housewife as well as I'm a home baker. And I have one child, my daughter. And it's my childhood dream to become a very good model or a good actor. But my family are not belonging me to go in this field. But my in-laws are too much motivated to me. Go ahead with your dreams. We are with you. My husband before he is not ready, but he is now is supporting me a lot. And I have chosen this platform. This is the मीन्स बोलते हैं ना कि ये जो मैंने आपका ये प्लेटफॉर्म पकड़ा है ना, फॉर एवर इंडिया 2021 इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी। मुझे लेवल अप करने के लिए पहले मुझे ये लेवल क्लियर करना पड़ेगा। मुझे तो सुपर मॉडलिंग में जाना है, इसलिए वो धीरे धीरे होगा, एक साथ तो होगा नहीं। लेकिन आई एम वेरी 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 सो मच एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ पीपल। एंड सेकेंड थिंग मैं कहूँगी कि गुड थिंग्स come to people, good things come to who people they are wait, but the better things happen
do's, they are go out and get them. I'm believing in myself. I trust on myself कि मुझे कुछ भी करके बनना है means बनना है. That's it. तो सिमरन अब लंबी सांस लीजिए, ऑडिशन खत्म हो गया, ठीक है? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों से बात करने के लिए. मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों के बारे में जानने के लिए. आप लोग इतने इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं. और सिमरन, you have a lovely smile. And Simran, now tell me, of course, you know, modeling and acting has been your dream for sure. But do you have any other hobbies as well? Yes, my hobbies are traveling. Travel the all world. अच्छा, सारा वर्ल्ड ट्रैवल करना है? But I think you know, your dream is such that will ensure that you will travel the entire world. So let's have your ramp walk, Simran. sure, ma'am. Ma'am, am I visible? Yes, yes, you're visible, Simran. Let's start. Yes. सिमरन, your video is stuck. In case you can hear me, I think आपका नेटवर्क बफर हो रहा है, तो आपका वीडियो रुक गया है. Shall I do again? Yeah, one more. One more. Seriously, you like it? Or you bore it? I really liked it. आपने बहुत ही, you know, passionately looked that you were trying really hard. But of course, you know, professionals होते हैं, तो वो आपको अच्छे से train करेंगे ताकि आप एक और finer level पे पहुंच पाएं. Because supermodel बनना आसान नहीं होगा. It's going to be a journey, right? But I'm sure that you are all prepared. So thank you, Simran. It was lovely talking to you, and I'll move forward and speak to Shweta. Hi, Shweta. Shweta, आप mute पे हैं. Hello, ma'am. How are you? I am fine. Okay, so Shweta, please tell me more about yourself. Yes, my name is Shweta Yadav. I am from Surat, Gujarat, and I am 18 years old. I had just completed my 12th, and obviously I am a NEET aspirant preparing for medical. And my hobbies are modeling and traveling all over the world, and become a successful model. Okay, so NEET aspirant हैं आप और उसके साथ साथ modeling का सपना पूरा करना चाहती हैं. Yes. Very hardworking, I must say. Okay, so I wish you all the best for your NEET exam, and let's have your ramp walk, Shweta. Yes, ma'am. Just wait. श्वेता, आपका वीडियो अटक गया है. In case you can hear me, your video is stuck. Now it's visible? It is buffering a little. Network issue है, I guess, थोड़ा आपके corner पे. Like now it's okay? Yeah, I think it's better. You can start. Simran, do you want to say something? Yes, ma'am. Yeah, tell me. मुझे और एक बात कहनी थी जो मैंने बोली नहीं.
अगर आपको बात ऐड करनी है तो मुझे श्वेता का कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, ठीक है? हाँ जी मैम, चलो। Yes, Sweta, that was good, and I love what you're wearing. You're wearing a very appropriate dress. Love the way you've dressed up yourself. So good job, Sweta. Looking forward to see you in the training sessions. Thank you. Thank you. Yes, Simran, go on. What did you want to say? क्या मैम, आई एम बिलोंगिंग टू सिंधी कास्ट, ठीक है? तो हमारी कास्ट के लोगों की जो मेंटेलिटी है, दैट इज कि एक लड़की जब मैरिड होके घर आती है ना, तो उसको सिर्फ घर संभालना है, बच्चा संभालना है, दैट्स इट। तो मैं उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी बनना चाहती हूँ, कि उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक लड़की घर संभालने के साथ साथ अपने ड्रीम्स भी कंप्लीट कर सकती है। और क्या है कि हमारी कास्ट में ऐसा बहुत कम होता है जो मॉडलिंग और एक्टिंग की लाइन में जाते हैं। दैट्स इट। Okay, Simran. See, I think ये caste issue नहीं है, ये society issue है. You know, women are mostly put into boxes that इस तरह से रहना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, हर चीज पे एक तरह का कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश की जाती है. एंड आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट कर दिया है. आप आज ऑडिशन में बैठी हैं, बहुत बड़ी बात है, राइट? आई एम श्योर आपको पता होगा कि काफी लोग यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं. सो kudos to you. And I will get back to you in a while. Let me just have to know more about these people. Hi, Chaitra. I hope I pronounced your name right. Can you please unmute yourself? हाँ, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? I'm Chaitra KV. I'm come from Tumkur. 21 year old. My hobbies to reading stories, paintings, pencil sketch, etc. Traveling, and completed engineering, electrical and communication. Okay, so why is an engineer here today? आपका क्या सपना है इस प्लेटफॉर्म के साथ? You want to become a model? Yeah. Okay, so that's your dream. Yes. Wonderful. So इतना सोचना नहीं है चैत्रा, अगली बार कोई पूछे तो, ठीक है? You should be honestly saying कि मुझे मॉडल बनना है and I'm going to do whatever it takes to become a model. ठीक है? अपने सपने खुल के सबके सामने रखने हैं. Nobody is judging you. There is only one Chaitra, है ना? Yeah. Okay. Yeah. So do not be nervous and you look lovely. आपकी smile बहुत प्यारी है and I would recommend you to start with your ramp walk. Thank you. Okay. Hello. 1 second. I start with the ramp walk. Yes, yes. Go ahead. Is visible? Yes, it's visible. Go ahead. Okay. Okay, Chaitra. Thank you. Thank you. आपकी रैम्प वॉक थोड़ी कैजुअल थी, बट आई एम श्योर विद द राइट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द एक्सपर्ट्स आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगी, ठीक है? Thank you. Chaitra. And let's hear it from the one with the username Galaxy J4. Hi. Hi, ma'am. How are you? I'm good. Okay, can I please have your name first? My name is Pooja Kohli, and I'm from Mumbai. And professionally, I'm an accountant. And about my hobbies, I like drawing and dance also. And apart from dance, I do yoga also. And about my family members, there are 3 people: my mom, my sister, and me.
So my mom raised me so well, and she never told me to quit the job, quit the studies and do job. She always supported me, and that's why I want to become a model. Okay, so that is interesting. ये आपने काफी इंटरेस्टिंग मोड़ दिया अपने कॉन्सेप्ट को. So आप अपनी मॉम के लिए मॉडल बनना चाहती हैं? आपका खुद का सपना नहीं है? मैम मेरा खुद का भी सपना है, बट मेरी मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मुझसे ज्यादा मम्मी एक्साइटेड है. Wonderful, wonderful. You know, it's always have to. It's always great to have your family support. And you know, आपने बताया कि आपको ड्राइंग और डांसिंग पसंद है, which I'm sure हमें आगे देखने का मौका मिलेगा. So आपको Yes, ma'am. interest तो नहीं है? आप भाग रही थी, मैंने देखा. अरे मैम एक्चुअली वो थोड़े से बच्चे परेशान कर रहे थे. Okay, so हम आपका रामबाग देख सकते हैं, पूजा? Yes, ma'am. Sure. Go Yes, ahead. ma'am. Wait, huh? Enough. Thank you, Pooja. Thank you so much. आपने बहुत जल्दी में खत्म किया. I think you were, but it's okay. No problem. I'm sure you know, with time आप सीख समझ जाएंगी. तो आपके अंदर चाह है, and that is more than enough. Thank you, Pooja. It was lovely talking to you, and let's move forward to Oppo A9 जिन्होंने बहुत ही stunning neck piece पहना हुआ है. आप प्लीज अपने आप को unmute कर सकती हैं? Hello. Hi. Can I please have your name? May I audible to you, ma'am? Yes, yes, you are audible, my dear, and you look lovely. आप प्लीज मुझे अपना नाम बता सकती हैं? Akanksha Sawan, ma'am. Okay, Akansha, how are you? I'm fine, ma'am. How are you? I am good. Thank you for asking. Can I please have your introduction? Of course, ma'am. First of all, your voice is motivate for us, for everyone to present in Zoom meeting. Thank you. That is really sweet. Thank you. And now let's move from us to you. First of all, thank you so much to introduce myself in front of you. My name is Akanksha. I'm from Ghaziabad. I have completed my graduation. So I'm talking about my study and my height, my age. My height is 5.3 inches and my age is I'm 22 years old. Thank you so much. And I'm a professional dancer, ma'am. Okay. Hello. So you are like a Bollywood freestyle, or do you have any, you know, knowledge of classical dancing or something like that? Yes, I have. I know all the dance styles, ma'am. Oh, wonderful. Yeah, that is some good talent that you have. And Akansha, now tell me, आप dancing में interested हैं, so why are you here today? यहाँ से क्या सपना लेके आ रही हैं? Because अगर मैं बात करूँ, मैम, crown. This is so important for me because this is create my identity. Crown is most important for me because crown मिलते ही ना एक ना identity create हो जाएगी and fame it's most important for me and most important for everyone, not me. This crown is so important. I have no words to explain this. How can I say that? So important to me. It's so important to me. That's why I participate in this. Okay, Akansha, आपको words की जरूरत ही नहीं है. आप जितनी तैयारी के साथ यहाँ आई हैं, the way you have dressed up, done your makeup, you know, put up a neck piece also, it shows that you are very passionate, and I appreciate that. And you look lovely, like I mentioned. So let's have your ramp walk. You too, also, ma'am. Of course, ma'am. Thank you. Ma'am, may I visible to you? Yes, yes, you are. Go ahead. Okay.
आकांक्षा, थैंक यू सो मच. मैं एक चीज अप्रिशिएट करना चाहूंगी. यू आर द ओनली वन जिन्होंने बहुत ही राइट काइंड ऑफ हील्स पहने हैं. यू आर वेयरिंग स्टिलेटोस. सो किसी भी रामबीर के लिए स्टिलेटोस आर द ओनली काइंड ऑफ हील्स दैट आर रियली रियली गुड. सो जैसे कि मैंने कहा, आपकी वर्ड्स से ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन बोल रही है कि आप कितने तैयार हैं और कितने एक्साइटेड हैं यहाँ आने के लिए. सो थैंक यू so much, and I'll move forward and get back to you in a while, okay? Okay, ma'am. Thank you. Hi, Kajol. Bye. Finally, for the third time, Kajol, आज आप सही मीटिंग में हैं. अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हेलो मैम. हेलो, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ. फाइनली आज आपका ऑडिशन ले ही लेते हैं, है ना? हाँ. चलिए, आज फिर से अपने बारे में बताइए. My name is Kajol Rathod. I'm from Rajasthan, Jodhpur. My hobby is makeup artist and मेहंदी artist and modeling. Modeling का तो मेरे को बचपन से था, but family और मेरे को इसकी वजह से मेरा वो नहीं हो पाया. और फैमिली भी मेरे को, वैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे इतना अलाउड नहीं करती, और अलाउड अगर करे तो भी इतना बाहर भेजना, वहां तक इतना दूर, कि ऐसे पॉसिबल नहीं हमारा कि लड़की को अकेले कहाँ भेजे ऐसे. तो इस वजह से मैंने, और फिर मैंने ना एक बार ऐसे फॉर्म भरा इंस्टा पे, मैंने ये देखा था फॉरएवर वाला, तो फिर उसमें मेरा फिर वापस मेरे को रिटर्न मैसेज आया कि आपका मतलब ये हो रहा है, तो वापस ये रैंप वॉक. और फिर मेरे को दी का और मैम का कॉल आया था कि अगर आप इनमें इंटरेस्ट हो, आपको जो आपका ड्रीम पूरा करना है, आप आराम से कर सकते हो इसमें, घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो भी आपका टैलेंट है आप इसके जरिए बता सकते हो. तो इस वजह से मैंने ये अप्लाई किया और फाइनली हो गया. परफेक्ट. तो आज का जो फाइनली हो गया, सही बात आपने बोला. एंड आई लव योर हेयर. और उस दिन भी आप, जिस दिन आप रैंप वॉक कंप्लीट कर रही थी, यू वर लुकिंग वंडरफुल. आई नोटिस दैट डे. एंड आज आपका रैंप वॉक देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. जी जी, जो विजिबल, गो अहेड. थैंक यू काजोल, थैंक यू. आई लव योर ड्रेस. आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट आउटफिट चूज किया है. बस आप थोड़ी भागा दौड़ी में कर रही हैं, बिकॉज आई थिंक आप बहुत एक्साइटेड हैं कि ये जल्दी से खत्म हो जाए और मेरे को पार्टिसिपेशन मिल जाए. सो बस. और वैसे मैं ना मैम जोधपुर आऊंगी, मेरे को थोड़ा सा वो प्रोफेशनल कुछ करना है, तो इस वजह से. ओके ओके. वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड. लेकिन हम आपको ग्रैंड फिनाले में मिलेंगे अब, है ना? तो आप वहां तक पहुंचिए, तैयारी कीजिए, मैसेज कीजिए, and I'm sure you're going to do great. Thank you, Kajol. I'll talk to you in a while, and let's move on forward to Shreya. Hi, Shreya. Hello, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? I am good. Thank you for asking. Can I please have your introduction? Yes, ma'am. So I'm Shreya. I'm a fashion designing student and I'm 19 years old. Currently, we are in Odisha. My dad is in army. My father is in army. So we move from one place to another. So all my school years, we have like experienced a lot of different cultures. I've met like a lot of different people and met a lot of people, and it kind of enhanced my experience in like and in socializing and like interacting with people and learning about different cultures. So that's about like my upbringing. And from my hobbies like since I'm a fashion designing student, I have always been interested in painting, sketching, and in
for the last few years, I've also learned, like I started learning how to play a guitar. And then I also like, when it comes to sports, I'm very into sports. So I know how I'm a good I can say that I'm a good badminton player, and I have learned horse riding. I know horse riding and swimming as well. And but out of all the things, I'm really passionate about, like fashion designing is one of my major passions. But the reason why I chose, like why I wanted to be here, is because ever since I was a kid, I used to watch all these Miss India and Miss Universe. And one of, like, a person I know, she was my school head girl, and she became a Miss Diva 2017. So it's I've always been interested in being a part of this journey, and I feel like it really enhances your personality. You like become more confident than you were before joining a beauty pageant, because this beauty pageant is not just about like outer beauty, it's more about like your inner beauty. You learn a lot of things, you gain an experience for the lifetime. So that's why I wanted to be a part of this as well. Wonderful. Shreya, that was very well put. And you are a very, very multi-talented person, I must say. And I'm sure we get to see good opportunities to, showcase and, observe your talent in the coming talent rounds. Thank you so much for putting it out so well. And I would request you to start with the ramp walk. Yes, ma'am. Can I take like a second to adjust? Yes, ma'am. So that was it. Is this? Yeah, it was decent enough, and I'm sure the experts will be taking care of the technique. Thank you, ma'am. Please keep your mic off. आपका mic बार-बार unmute हो रहा है. Okay, moving forward, let's hear it from Payal Yadav. Hi, Payal. हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। आप इतनी सुंदर लग रही हैं, आपने वीडियो क्यों ऑफ किया हुआ था? मैम मुझे लगा कि वीडियो एंड मतलब म्यूट और वीडियो दोनों ऑफ करके रखना है, म्यूट करके रखना है, वीडियो भी ऑफ करके नहीं नहीं। एंड थैंक यू मैम। ओके, सो पायल, नाउ टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आपसे बात करके और भी बढ़िया। अब मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Payal Yadav and I am 21 years old. I am from Sikkar, Rajasthan, and now I am a government employee and posted as a laboratory assistant in government school, Alwar district. And about my hobbies, ma'am, I love traveling. मैंने last 1 year में 8 जगहों पे travel किया है। मतलब मैं travel को लेके काफी ज्यादा ऐसे crazy हूँ, like मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। And dancing, I love dancing. Every time I'm dance, when I'm sad, I'm happy every time. And मैम योगा भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब लाइक योगा मेरी एक हॉबी है। मुझे फिटनेस के लिए योगा नहीं करना, मुझे मतलब पसंद है बहुत ज्यादा योगा करना। एंड स्टडीज में तो मैम मैंने वैसे बीएससी करी है, बट बीएससी के साथ ही मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिलेक्टेड हूँ। एंड why I am participate here just because it's my childhood dream. मैं मुझे कोई एकदम सक्सेसफुल मॉडल बनने का वो नहीं है कि अगर मैं नहीं भी बनूं मैंने ओके, बट मेरा एक ड्रीम है कि घर वालों बोलते हैं कि जॉब लग गई इट्स इनफ, बट ये मेरा ड्रीम है। मुझे एक बार तो पार्टिसिपेट करना है एंड एक बार तो मुझे ये मेरा सपना पूरा करना है, इसलिए। जी, थैंक यू पायल। आई लव योर ऑनेस्टी दैट यू नो आपको आपके लिए बॉटम लाइन आपकी क्राउन नहीं है लेकिन आपकी जर्नी है। यू वांट टू फुलफिल योर प्रूव इट टू योरसेल्फ। अच्छा लगा ये जान के। थैंक यू सो मच एंड कैन वी हैव योर रैंप वॉक प्लीज? यस मैम, कैन आई जस्ट सेकंड मैम प्लीज? श्योर।
Let's start, ma'am. Yes, yes, you're visible. Go ahead. Is it okay, ma'am? Round 5. Oh, madam. Okay, ma'am. Thank you, Payal. Thank you so much. And you look very smart. The only thing that I would like Thank you, ma'am. अपने wedges पहने हुए थे, if I'm not wrong. So जैसे कि मैंने आकांक्षा से बात करते हुए बोला था. Yes, ma'am. वो एक्चुअली यहाँ पे काफी टाइम से बारिश हो रही है एंड इतना बड़ा मार्केट नहीं है जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, तो मैं ले ही नहीं पाई एंड स्कूल टीचर हूँ, तो मैम आपको पता है हील पूरे दिन कंफर्ट नहीं कर पाते. मैंने सिर्फ मेंशन किया, टेंशन लेने की जरूरत Yes, ma'am. I know the heel just fancy heel होनी चाहिए and 4 inches also. नहीं घबराना नहीं है पायल. मैं वो जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेंशन कर रही हूँ. हम सी द पॉइंट इज द मेंटर्स आर गोना ट्रेन यू, राइट? अगर हम आपकी गलतियां नहीं बताएंगे तो आप सीखेंगे कैसे? Yes, ma'am. Good job, Payal. Thank you so much, and I will be getting back to you in a while. Let's Yes, ma'am. Zoom user. Can I please have your video? Hi. Hello, ma'am. Hi, you look lovely. Video क्यों off? Thank you, ma'am. Can I start? Yeah. But tell me, आप इतनी तैयार होके बैठी हैं तो वीडियो क्यों ऑफ कर रखा था? Ma'am, surprise. अच्छा, okay. So can I please have your name first because I'll have to note it down. Pizza. Pizza. Okay. Lovely Yes, name. ma'am. Pizza. How are you? Fine, ma'am. How's you, ma'am? I am good, and go ahead. Start your introduction. You look really I will excited. start with the thought, ma'am. Yeah. If you want to shine like a sun, firstly, burn like sun. With this, good evening to one and all present over here. I am Fuza from Kangra. I'm 19 years old and my height is 5 feet and 6 inches. I'm pursuing my fashion designing from Chandigarh. I belong to joint family. I believe family gives us the root to stand tall and strong. My hobbies are modeling, acting, and traveling. I want to be a successful model. Thank you. Okay, Fizza, keep a hand on your heart and tell me, is your final dream to become a model or to become an actor? I want to be an actor. There you go. Okay. That is the kind of transparency we are looking for. It's okay. If you want to become an actor, you should proudly say, I want to become an actor. It's okay. I want to be an actor. Good job. See, now the smile is even wider and prettier. Thank you, Fizza. And now I would request you to start with your round. Okay, ma'am. Wait a second. Wait a second. So let's go. Are you there? I'm visible to you? Yes, you are. Go ahead. Okay, ma'am, I will start. Is it okay?
Lisa, one more round, please. Okay, ma'am. Okay. Thank you, Fiza. Thank you so much. You could sit back comfortably. Okay, ma'am. All right. So, all right, ladies, a very, very good job. And thank you so much. Thank you so much for putting it out so well. First of all, congratulations for completing your first step into the journey of Forever Star India. ये सिर्फ शुरुआत है आपके एक नई पहचान बनाने की तरफ. Because I'm sure by now you must have realized that you all are so different from each other. आप लोग अपने fields में, aspirations में बहुत अलग हैं एक दूसरे से. But one thing that is common amongst all of you is अपनी एक पहचान बनाने की जो चाह है, to create a unique identity for yourself. रास्ता अलग हो सकता है, किसी के लिए डांसिंग, किसी के लिए एक्टिंग, किसी के लिए मॉडलिंग, but it comes down to that, right? So thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, and you all are interesting, unique individuals. Of course, जैसे आप लोगों ने हमारे अपने बारे में बताया, we also, would love to tell you about our platform, how this platform is going to work, and what all awaits you on the journey of Forever Star India. So Jaya will be taking over from here for a little while, and then I will be winding up. Jaya, over to you. Thank you, Terry. Thank you. So yes, I guess all of you are very much relieved now. Right. So the first part is done. Your audition is done. What comes next? An audition report card. So this is happening first time that a beauty pageant is providing you an audition report card or an audition certificate. So it is a transparency. Whether you selected or not selected, that is a different part. But you should know where are you standing currently, right? So for that, you are going to receive your audition report card within 24 to 48 hours of your audition, and your details will be mentioned there, like your hobbies and everything will be mentioned. And if you are selected or not selected, that would be written in the audition report card. Thank you, Harry. Now you can take it over again. Thank you, Jaya. So आपको audition report card का importance समझ आ गया होगा. It is just a way from our end to appreciate you. Because I'm sure, आप सुबह उठे, you chose the right kind of outfit, you chose the makeup that you wanted to do. And of course, बहुत सारी हिम्मत, to talk to an absolute stranger about yourself. Because it takes a lot of confidence, courage, अपने बारे में किसी एकदम नए इंसान से बात करने के लिए. So to beat that nervousness and sit across a virtual screen while you look lovely is something that we would want to appreciate. और उसी input के result में आपको एक audition report card within 24 to 48 hours, of course barring the Sunday because it's weekend, आपको भेज दिया जाएगा. And it will be sent to you no matter if you get cleared or not. And of course, what happens after the audition report? You become a participant, you clear the audition, and you become a part of our FCR community. Now, why do I call it a community? Because pageants और award shows हमारे लिए सिर्फ जरिया हैं ऐसी passionate, talented women के साथ जुड़ने का, who are here to create a mark for themselves. Your talent could be anything. Your talent could be, for example, most of you mentioned that you are into yoga, into dancing. So anything of that sort, we are here to give you the right kind of opportunity and the right kind of, platform for that matter. So first things first, अगर, आप लोगों में से कितनों ने अपना नाम गूगल किया है कभी गूगल पे अपना पूरा नाम डाल के देखा है? ओके, सो क्या होता है, गूगल पे एक ही नाम के बहुत लोग होते हैं. अगर सिमरन ने किया है तो सिमरन तो बहुत ही सारी होंगी, मुझे पता है ना. वेरी कॉमन नेम. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी प्रोफाइल हमारी वेबसाइट पे बनने के बाद, वी विल बी ऑप्टिमाइजिंग इट इन अ डिजिटल फॉर्मेट इन सच अ वे कि जैसे ही सिमरन वाधवा अपना नाम डालेगी गूगल पे, उसको अपना नाम टॉप पे मिलेगा. So imagine the kind of idea that it goes into it, and that is एक step तो पूरा हो गया अपनी अलग पहचान बनाने का, right? Google किया, अपना नाम सबसे टॉप पे मिला, और क्या चाहिए, as an FCR participant. So this is the kind of format we are going to follow, और ये आप सबको मिलने वाला है irrespective of you becoming a winner or not.
You being a participant is more valuable to us, because I'm sure, you know, what you take away from a journey, आप एक journey से क्या सीख के लेके जाते हो, वो ज़्यादा matter करता है rather than winning or not. जीतना तो है ही, I know all of you are passionate, you want to win the crown, but you know, eventually it should give you something, you know, you should learn something from it. Secondly, each of you will be receiving a unique hard copy certificate and a sash of your own. So basically आप अपने आप में एक winner बन जाओगे automatically, जो आपको घर पे भेजा जाएगा offline in a format so that, you know, each of you feel like a winner. Third, moving on, you will receive a lifetime membership of the platform. Now, what do I mean by lifetime membership is that you will be receiving opportunities depending upon your talent for a period of lifetime. जैसे कि काफी लोगों ने अगर acting का mention किया, in the coming year, we hopefully intend to launch our own OTT platform. Now, I'm sure OTT के बारे में हर कोई जानता होगा, you know, Netflix, Amazon are the way that we have been surviving during the pandemic. ये हमारे करता धरता रहे हैं because cinemas have been closed, right? So we will be calling out opportunities for actors, playback singers, choreographers, and all sorts of profiles to ensure that, you know, your talent gets the right kind of platform. Okay, and that's not it. So in case you are into fitness, in case you are into makeup, so when Kajol says that she's a makeup enthusiast, or you know, when Shreya says she loves fashion and she's into fashion designing, we might collaborate with her as a trainer next year, where she will be training season 2 participants. So for us, what matters is your talent, your personality, and not how you look, not how, you know, your outer beauty is. It's eventually what is your personality. Of course, we'll be grooming it. Now, coming to, you know, एक होता है बोलना और एक होता है expert से सीखना. So to make sure that आपका talent आप खुद भी पहचान पाओ, because a lot of you mentioned, you know, वो कहीं ना कहीं confidence में कमी है अभी भी, अपने बारे में बात करने में भी थोड़ी झिझक आती है, nervousness आती है. So for that, you will be trained for 3 to 4 months till the month of December extensively. Online ही होगा सब कुछ by 150 plus experts from different fields. So we'll have makeup artists, image consultants who are internationally certified, you know, ramp walk experts, because I'm sure आप सबने ramp walk की है, लेकिन आपको पता है कि आपकी ramp walk में भी बहुत improvement की ज़रूरत है. You know, you need to learn a lot more. So we'll have experts, we'll have, you know, fitness experts, we will have fashion stylists, teaching you in every aspect to make sure आप जीते ना जीते, but when you enter a party after 3 months, you will be proudly calling yourself an FCR participant, walking in those 3 inches comfortably. So that's the kind of deal that we intend to offer, because see, एग्जाम तो रखना बहुत आसान है, पर एग्जाम की कोचिंग देना बहुत जरूरी है. तो अगर एग्जाम हम होल्ड करेंगे तो कोचिंग भी हम ही लोग देंगे. So you will be receiving extensive training and grooming sessions which will be happening online. जैसे कि काफी लोगों ने mention किया, you do not have to travel anywhere. Okay, so it will be all done within your comfort zone. But अब आती है बात कि crown कैसे मिलेगा online? Crown तो online नहीं पहनना है किसी को, right? I'm sure nobody wants to wear that crown online. You want to wear it in that couture gown offline by a celebrity. So we'll be holding our grand finale in the Pink City of Jaipur in December, from 17th to 20th of December, for that matter, you know, in Marriott Hotel. It is going to be an exuberant affair where, you know, the entire team is going to be there and winners are going to be there. And by winners, I mean 300 plus winners from across the country. So yes, it's not just going to be one winner. We will have 300 plus winners, because we will be crowning winners at city, state and national winner. So basically, अगर आप अपनी city से winner बनते हैं, city level पे, आप state level पे winner बनते हैं, आप लोग grand finale का हिस्सा बनेंगे. You will be walking down the ramp in those beautiful, beautiful gowns and wearing those crowns to be given by a celebrity, and your name will pop up in front of national media houses. Of course, on the same lines, you know, there is one thing that I would like to give you a heads up for. So ये lifetime membership और ये सारी grooming training avail करने के लिए, you have to pay a minimal participation fee of 4,000 plus GST. Okay, so 4,000 plus GST would be the fee जिसमें आपकी सारी lifetime membership, your training and grooming sessions, everything will be included, and the customer care team is always there to guide you out throughout the entire process. So you do not have to worry about anything. Wait for your audition report. I'm sure you guys are going to do great. I am sharing Forever Star India's social media details into the chat box. Make sure you guys take a screenshot.
बिकॉज मैंने बोल तो बहुत कुछ दिया, बट अब आपको इसका प्रूफ भी चाहिए होगा, है ना? यू वुड बी लाइक अरे इसका कुछ प्रूफ भी तो मिले, हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे चल रहा है सब कुछ. सो एवरीथिंग इज आउट देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ये रिकॉर्डिंग, ये ऑडिशन भी यूट्यूब पे जाने वाला है, तो आप लोग ऑलरेडी स्टार्स और सेलिब्रिटीज बन चुके हो, ठीक है? सो ऑल ऑफ इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द स्क्रैच. सो इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च कीजिए. यू ऑल आर स्मार्ट वुमेन. See what our platform is about. जो मैंने बोला है उसको समझिए. How our participants work, how our training sessions have been going on, and trust me, you're going to have a fun ride even researching. अपना weekend यही करते हुए spend कीजिए और अपने audition report का wait कीजिए. Thank you so much for hearing me out. It was an absolute pleasure talking to each one of you. बहुत अच्छा लगा and I'm really looking forward कि मैं आप सबको training sessions में मिलूं and we build a journey of a lifetime. So all the best. Now, if you have any questions, please go ahead. Will be more than happy to answer. कोई भी सवाल, confusion है, please आप लोग पूछ सकते हैं. Otherwise, customer care team will be calling you to explain the process once you receive the audition report as well. मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है. मैम, can you hear me? Yes, I can hear you, but आपका वीडियो रुका हुआ है. Hello. Yes, Simran, I can hear you. मैम वो रिजल्ट आपका दिख नहीं रहा वीडियो. क्योंकि सिमरन आपका नेटवर्क थोड़ा बफर. रिजल्ट तो 24 आवर्स के बाद आएगी, उसके बाद. Okay, I think Simran's network is weak. Anybody else, if you want to take a question, please go ahead. मैम जी पायल बोलिए. मैम ऑडिशन रिपोर्ट कल मिलेगी या फिर आफ्टर देन 24 आवर्स? कल संडे है, द टीम इज नॉट वर्किंग पायल, तो आपको मंडे शाम तक या ट्यूसडे सुबह तक ऑडिशन रिपोर्ट मिल जाएगी. ओके मैम, थैंक यू. यस सिमरन, अब आपका वीडियो विजिबल है, बोलिए. मैम अगर सपोज हम लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, हमारा जो रिजल्ट है उसके बाद जो दिसंबर में जो ग्रैंड होगा उसमें हम लोग पार्टिसिपेट ले सकते हैं? नहीं, तो वो तो फिर इसी से एसोसिएट हो गया, राइट? आपका ऑडिशन. और आप ये क्यों सोच रही हैं? पहले दिल नहीं छोटा करना है, आप जरूर सिलेक्ट होंगी एंड आई एम श्योर यू ऑल आर गोना मेक इट. यू ऑल आर ब्यूटीफुल वुमेन, सो डोंट वरी. तो जो आपने अभी फीस बताई 4000 प्लस जीएसटी, उसमें इंक्लूडिंग सब रहेगा, मेकअप, ट्रेनिंग और सब कुछ, एवरीथिंग, जो गाउन्स वगैरह आप लोग दोगे, एवरीथिंग इज टिल यू बिकम अ विनर, तब तक सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप एंड ऑल. अगर आप विनर बनते हैं तो आपके स्टे और फूड हैंडल करने के लिए जो मिनिमल चार्जेस होंगे वो आपको डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे. ओके. लेकिन अगर आप जब तक आप विनर नहीं बनते तब तक सिर्फ मेहनत करो और तैयारी करो एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. ओके मैम. Anything else, ladies, that you wish to ask? Okay, great. Have your dinners. Have a wonderful time with your evening. Have a great weekend. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके and really looking forward to see you guys all with the same smiles. And have a lovely evening ahead. Goodbye, guys. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye.